Yes, Vite. So let us start the work. Yesterday we have started uses or what are the advantages. Wholesale price index has been done in detail. Wholesale price index and its relation with the rate of inflation, that has been done. And yesterday we started this what are the advantages or importance or benefits or merits, kuch bhi word aa sakta hai, of index numbers. So 3 points were already discussed. Ki when there is rise in price index level, that shows there is a fall in the value of money, and when there is a fall in the price index level, that means there is improvement in the value of money. 2-3 lines were also told to you. Second was ki with the help of index numbers, price index numbers, we can come to know about the standard of living of the people. Standard of living means how much expenditure is incurred by the people on the purchase of their day-to-day required things. So if price index is less, that shows now people have more money with them, they are left with more money, they can spend more. But on the other side, if price index is more, that means there is inflation and they won't be able to buy more things, and hence there will be deterioration in their standard of living. Okay. Then third point was adjustment in salaries and allowances. So whether the people they are working in government sector, means public sector, yeah, private sector, so whenever any improvement, any change is brought in the status of salaries and allowances, that is also done by observing the level of inflation or price index in the economy. So if prices are rising, now which statistical tools tells us about this rise in prices, that is index number. So if there is rise in price index numbers, most of the time the employers they try to improve the salaries, increase the salaries, and on the other side, if there is a fall in the price index level, that means the employers they do not pay much attention in increasing the much attention to the increase of salaries. यहाँ तक हमने किया था. Now today next point is useful to business community. Now, how is it useful to business community? Business community means those producers and sellers, especially producer come sellers, those who are in the business, those who are involved in the process of production and selling that production. Okay? Now, how index numbers help them? Now, they help them in this way, कि when there is improvement in the price index numbers, rise in price index number. In simple terms, for a consumer, it means the situation of inflation. महंगाई की situation है. But you think from the viewpoint of the producer and seller. For them, it is a profitable situation. Whenever their goods are being demanded, their prices are rising. So as a consumer, तो it is a bad thing for us. We will not like this situation. But if we are in the capacity of a producer या sellers, then we would be very happy. हमें तो फायदा ही हो रहा है ना, price ज़्यादा हो रहे हैं. तो that means कि if price index numbers they increase, तो they encourage the producers or business people to produce more, क्योंकि उनको लग रहा है कि their things are in demand, that's why those things are getting sold even at high prices, so they feel encouraged. But on the other side, if there is a fall in price index numbers, that means their things are not much in demand, they are not getting sold, so it will discourage them to produce more. Okay. Now you have to think from the viewpoint of a business person. अपनी as a consumer नहीं सोचना, think from the angle of a businessman. When will he be happy? When his things are getting sold at high price. So he will be happy and he will be encouraged, inspired to do more production. But if price index numbers are less, that means his things are not getting sold. He will feel discouraged. उसको बहुत बढ़िया नहीं लगेगा. He will not tend to produce more in the coming economic year, in the coming year. मतलब अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में ही विल प्रोड्यूस मोर. इफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर लेस, देन इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब whatever planning he is doing for the next financial year, he will try to produce less. But simple, these two lines are to be given. Then information regarding production and foreign trade, ये दोनों quite similar. Now यहाँ पर production में we have to pay attention to agricultural production as well as industrial production. So if there is rise in index numbers, see whenever we are talking about index number, तो यहाँ पर mainly हमारा index number होता है price index number होता है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है regarding production. तो as I told you yesterday कि जो index numbers है they can be prepared for any economic variable, not only for prices, rather index numbers can be prepared for production as well as for exports, imports, any population, any economic चीज के लिए index numbers can be prepared. तो whenever there is
index numbers of production are prepared for example, agricultural production is increasing, मान लो in the country industrial production is increasing, तो in that case जो index number for this production है, they also show an improvement, उनकी भी value increase हो जाती है. अभी ये लास्ट ईयर दिस पार्ट वाज इन सिलेबस, इसके न्यूमेरिकल्स भी थे. दिस ईयर दे आर नॉट इन सिलेबस, तो इस करके हमने किया नहीं है. बट अदरवाइज इन सिंपल टर्म्स, वैल्यू ऑफ index of industrial production that increases when there is more industrial output in the country. Similarly, value of index of agricultural production that shows an improvement whenever there is more agricultural output in the country. Okay, good harvest है, ज़्यादा production हो रही है manufactured items की भी, तो there will be improvement in the index of industrial production. यहाँ पर आपने इतना ही लिखना है, detail is not required. Then similarly for foreign trade, now foreign trade means the exchange of goods between countries, among countries. So that exchange can be in the form of exports as well as imports. So both are together known as foreign trade. So if more things are being exported, so there will be improvement in the index number for exports. If less things are being exported, there will be deterioration. Similarly, imports के लिए ज़्यादा imports होते हैं, तो value of index for इम्पोर्ट्स, जो भी चीज़ का बनाना है ना उसका नाम लिख देना है साथ में, तो इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी. अगर मोर इम्पोर्ट्स हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. सी इंडेक्स नंबर वर्ड कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द वेरिएबल. इट मे बी फॉर प्रोडक्शन, whether agricultural or industrial, maybe for export, maybe for import, maybe for population, कोई भी चीज़, birth rate, death rate, anything can be taken. बस वो वर्ड साथ में एडजेक्टिव लगा देना है, बाकी सेम है. ठीक है. नेक्स्ट इज यूजफुल टू पॉलिटिशियन. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैनी टाइम्स यू वुड हैव वॉच्ड इन द न्यूज ऑल्सो, टीवी के ऊपर लाइव सेशंस ऑफ budget session या otherwise parliament session, their live telecast is there. So in that you would have seen many politicians, especially of opposition parties, they most of the time they criticize the government, है ना. तो for what they are criticizing? They criticize the government अगर economic matters के ऊपर discussion is going on, तो during that time politicians, leaders, they make member parliaments, they make use of the data which is based on index numbers. तो इंडेक्स नंबर को देख के ही वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं. अगर इंडेक्स नंबर मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड, तो इसका मतलब हो गया कि इन द इकोनॉमी नॉर्मली चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं एंड पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी इन रनिंग देयर डे टू डे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, है ना. तो इसका मतलब हो गया कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज के, दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दे कलेक्ट दिस डाटा फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. खुद नहीं बनाने बैठते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो. जो भी पब्लिश्ड मटेरियल होता है, सोर्सेज होते हैं न्यूज़पेपर्स में से या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में से, दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ठीक है. जब देयर इज फॉल इन प्राइस इंडेक्स नंबर तब नहीं कुछ भी कहते, बट अगर इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस देन दे ओपनली एंड वेरी बिटरली दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो दैट मीन्स ये इंडेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, इन ए वे दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू द पॉलिटिशियंस ऑल्सो. Next and last is useful to government. Now how is it useful to government? कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं, by keeping in view the performance or the status of index numbers, government tries to formulate various policies. ठीक है. पॉलिसी का मतलब होता है प्रोग्राम विच कैन बी अप्लाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सेक्टर. जैसे आप अपना प्लान करते हो कि मैंने आज ये पढ़ना है, ये काम करना है, तो आप अपनी पॉलिसी बना रहे हो, यू आर मेकिंग योर प्रोग्राम फॉर द डे. ठीक है. तो प्रोग्राम मीन्स पॉलिसी. तो जो गवर्नमेंट है ऐसे ही फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ये अपनी पॉलिसीज परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं. दोज पॉलिसीज कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आउटपुट of various commodities. It can be related to level of employment and unemployment in the country. It can be, these policies can be related to this income status of the people of the country. It can be related to consumption expenditure, prices in the economy, या कंट्रीज ट्रेड रिलेशंस विद अदर्स. मतलब एनी वेरिएबल, कोई भी आप अपना नाम 2-3 लिख सकते हो, एनी वेरिएबल. तो जो भी गवर्नमेंट अपने डिसीजंस बनाती है फॉर द कमिंग ईयर्स, तो इट सर्टेनली इट टेक्स हेल्प, इट पेज अटेंशन टू द स्टेटस ऑफ इंडेक्स नंबर. उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो भी आगे का काम है, दैट इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ दीज 8 पॉइंट्स आर देयर. एज आई टोल्ड यस्टरडे, एट द मोस्ट वी विल बी हैविंग 6 मार्क्स क्वेश्चन हमारे सिलेबस और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग. तो 8 पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड.
जो भी points, whatever you find easy, and with good explanation you can mention in the paper. In case this type of question comes, you may learn any 6 points. ठीक है, ये इसमें सेपरेट कोई नहीं आएगा कि एक्सप्लेन दिस और दैट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेरी शॉर्ट पॉइंट्स आर देयर, डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. तो एनी 6 पॉइंट्स कैन बी लर्न बाय यू, जो इजी लगे आराम से आप कर सकते. ठीक है, with this chapter comes to an end. So once again I would like to tell you what have we done. एक हमने किया meaning of index numbers, then we have done wholesale price index number, theory part theoretical है ये completely. Then we have done this consumer price index या cost of living, उसका theoretical part as well as numerical part, both are equally important. Then we have done this inflation and wholesale price index, yesterday जो किया था वो भी as a separate question, that is important. After that we have started these uses or advantages. Any 6 can be done. ठीक, so as per the revised syllabus, this is the work which we are supposed to do, and we have, by the grace of God, we have been able to finish this work. ठीक है जी, चलो, with this chapter is over. Now today we are going to start next lesson, so I request you to please take out your chapter number, diagrammatic presentation, I think. हाँ जी, it is chapter number 6. Chapter number 6. Page number you see yourself, because I have old book. In my book it is page number 95. Now, अब इसमें हमने प्रैक्टिकल पार्ट है, सो एंड देयर इज वेरी मच स्कोप टू गेट फुल मार्क्स. Simply diagrams are to be drawn, very less theory part is there, that is to related to definitions only. So 99% is practical work, so very easy to score full marks. Now please remember the definition of statistics which we have done in the very beginning, in the very first lesson, singular sense definition. Now you will observe one by one we are covering all those things which were there in that definition. So let us recall what was that. Statistics is a science which deals with the collection of data, then classification या organization of data, then presentation of data, then analysis of data and interpretation of data. ठीक है, अब आप now you observe carefully classification, collection of data. So related to that we have done chapters primary and secondary data and census and sample. Those chapters are related to collection of data. Okay, after that we have done classification of data. The chapter we have already done classification or organization. That chapter is related to that part, classification. Okay, मतलब in the form of series we divide the data, individual, discrete and all that, continuous, फिर further their types, that is done. Then after that this presentation of data. So today's chapter is related to that third stage, presentation of data. ठीक, fourth one जो है analysis of data. तो analysis of data में we have done measures of central tendency, एक ये कर लिया हमने. Second one अभी जो index number है, that is again related to analysis of data. So जितना भी ये numerical part है, that is related to analysis of data. But right now today we are going to now start this third stage chapter, that is presentation of data. ठीक है, now when we have collected data with us, just for understanding, so we have 3 ways to present it. मतलब we have 3 options, 3 choices are there. What are those choices? Simply one manner to present the data is through tabular presentation, table की form में. Many times in your 10th class or even in 11th class also, in many books some table is given, some information is given in the form of a table. ठीक है, जैसे अभी इंडेक्स नंबर में बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन कोई टेबल दिया हुआ है हमें, वैल्यूज आर गिवन, तो दैट इज नथिंग एल्स बट द टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में. सेकेंड ऑप्शन विच इज देयर विद अस, दैट इज वी कैन प्रेजेंट दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम. कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट दिस लेसन टुडे. एंड थर्ड ऑप्शन इज दिस, क्या बोला मैंने, टेबल, डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में. तो जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं, दे आर प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ पेपर ओनली. They have this special characteristic. Frequency diagrams are to be shown only on the graph paper, right? So we have 3 options. Either diagrams can be made on the simple sheet. Vasudev Gupta, are you listening to me? I hope you are not at all attending the lecture, but you are enjoying some other song or something else. Busy in your own things, lost in some other world.
Please be attentive. All this is being recorded. Whatever you are doing, you are on my screen. So whatever gestures and postures you are showing, all that is getting recorded also. So please sit attentively and actively. So there are three ways. Either we can prepare tables, or we can prepare diagrams, or we can make use of frequency diagrams. So only difference between, as you can see in your book, here picture is little bit not very clear, but you can see in your books. One is, so types of diagrammatic presentation. Further means all these three chapters are there in our syllabus. Tables bhi hai, diagrams ka bhi hai, and frequency diagrams ka bhi hai. So today we are going to start only this first part, diagrams part. So now here जो diagrammatic presentation है, further it has three types. First is geometric form. Geometric form में आगे आ जाते हैं bar diagrams and pie diagrams. I think you have done all this work in 9th and 10th class also. Simple bar diagrams, pie diagram, circular diagram किए होंगे आपने, I think. So ये वो वाला part है. This is to be done on your simple simple paper, your register or answer sheet. Simple paper के ऊपर we can present these with the help of simply scale and compass and all that. Second is frequency diagram. Now frequency diagram की further types are given that we will do later, but the only characteristic is कि जो frequency diagrams है, they are to be presented only on the graph paper. ठीक है, ये जो geometric form के diagrams हैं, they can be presented on the simple plain paper, simple page, but these are to be compulsorily, they are to be presented on the graph paper only. So in the days to come, you please make arrangement of graph notebook also. And third one is arithmetic line graphs. Again, these are related to time series graph. Time se related data is shown here. This is also to be presented on graph paper. So these are the just broad types. ठीक है, इसमें से आज का जो चैप्टर है that is related to geometric form. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये उसके आगे बाद में सेपरेट चैप्टर्स आते हैं. सो नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट. Geometric form में bar diagram. Now what are bar diagram? Bar diagrams are those diagrams in which given data is presented in the form of bars. Now question may arise कि what is bar? Simple words में bar का मतलब है any rectangle. किसी भी चीज को, डाटा को when we present in rectangular form, that word is known as, that term is known as bar or rectangle. चाहे उसको बार डायग्राम कह दें, चाहे उसको रेक्टेंगुलर डायग्राम कह दें. ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल की फॉर्म में जो भी शेप आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल. ठीक, अब इसका बस इतना ही डेफिनेशन ही याद करनी है. आगे जो पॉइंट्स हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन के ही पॉइंट्स हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम, साइड बाय साइड आई एक्सप्लेन. नाउ नेक्स्ट इज कि जो ये बार डायग्राम्स हैं, दे हैव 4 टाइप्स. Okay, bar diagram हो गया that diagram which present a set of data in the form of rectangle or bars. Now these bars can be presented in 4 forms. 4 types are there. First is simple bar, second is multiple bar, third subdivided bar, or the same is called differential bar, and last is percentage bar diagram. Right? Now today we are going to start with the first one, and one by one I will explain the meaning. Simple bar. Now simple bar means that bar, that diagram which presents a single set of data in the form of rectangles or bars. Single set of data means in the numerical whatever information is given to us या will be given to us, that will be related to any single item. जैसे for example मैं आपको कहूँ कि marks of students in different years. अब यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स हो जाएंगे, टाइम पीरियड वो वेरिएबल नहीं है, बट वेरिएबल क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. और आई कैन गिव एग्जांपल जैसे इनकम ऑफ पीपल इन डिफरेंट ईयर्स, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ पीपल. या हम कहें पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, तो वेरिएबल क्या होगा, पॉकेट मनी. मीन्स एट ए टाइम वन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. टाइम पीरियड तो होना ही होना है, वो तो दिया ही होगा, बट उस टाइम पीरियड के रिलेटेड व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रेजेंटेड, दैट विल बी रिलेटेड टू एनी वन टॉपिक. एक बात से रिलेटेड होगा, उसी को क्या देते हैं, सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सिंगल सेट ऑफ डाटा या वन सेट ऑफ डाटा. ठीक, तो दिस इज टू बी ड्रॉन. नाउ यू प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, पेंसिल एंड स्केल. I have chosen the example of the book only, otherwise later on I will give you any other example also. So please write the statement first in column form. Don't write this horizontal way. Make 2 columns.
It's better to write in the notebook bete. All are requested. ठीक है. Question is कि present the, no need to write the question, बस simple answer लिख सकते हैं. Present the following information in the form of a vertical bar diagram. ठीक है. Vertical ही बनते हैं. इस way में vertical ही हैं. We have to draw vertical diagrams only. In your book, एक second diagram that has been presented in horizontal form. Please don't do like that. That is not very nice or easy to understand. This is the simplest form. तो ऐसे ही हम लोग करेंगे. So first column you write down year 1951 to 60. Then 61 to 70, then 1971 to 80. अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना नो प्रॉब्लम, आप सिंपल लिख लो 1961, 1971, जैसे मर्जी यू कैन राइट. Then 1981 to 90, फिर 91 to 2000, then 2001 to 2010. In six years have been given. Then information is given related to birth rate. Values are, give heading of second column birth rate. Values are 45, 35, 30, 28, 24, and last is 20. I repeat, 45, 35, 30, 28, 24, and 20. ठीक है जी. Now firstly, please analyze the values. What is the name of the variable here? It is birth rate. ठीक है. जो टाइम होता है, ईयर होते हैं, टाइम पीरियड इज नॉट ए वेरिएबल. वेरिएबल इज दिस बर्थ रेट. तो ये हमारा वेरिएबल है. नाउ यू सी इन दिस टेबल ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनली वन वेरिएबल, दैट इज बर्थ रेट. ओनली दिस इज गिवन, नथिंग एल्स. तो इसका मीनिंग हो गया कि वी कैन प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल बार. ठीक. नाउ इन योर नोटबुक एज पर द साइज ऑफ योर पेपर, दैट इज योर विश, ड्रॉ एक्सेस. That is your choice as per your available space. But थोड़ा try करो, एक medium sized होना चाहिए हमारा axis. ठीक है. Neither very small nor very large. And this y axis and x axis, इनका proportion जो है देखने में जैसे हम बोल सकते हैं 1 and 1.5. ये नहीं कि आपका y axis बहुत long है और x axis की width is very less. That is wrong. या x axis is very long and y axis is very small. That is also wrong. एक appropriate L size जैसे होता है ना, L alphabet, same way axes are to be drawn. Now on x axis write down year. Time या years are given, तो year. Year की जगह we can be given month also. अगर month है तो here we can write month. Year is given तो we can write year. And on y axis, whatever variable is given in the question statement, write that. So we are given here birth rate, so on y axis write down birth rate. Okay. If you don't mention the names of the axis, then 1 mark will be deducted. This is compulsory to be written here. Now, अब आप देखो, what is the highest value in birth rate column? Highest value is 45. ठीक है. आपने चेक करना है हाईएस्ट वैल्यू. अब 45 है तो इसका मतलब नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. अब आप देखो, इफ वी टेक ए गैप ऑफ 10 तो भी ठीक है, 5 पॉइंट्स बन जाएंगे ना. गैप आप अपना अप्रोक्सीमेटली, दैट इज अप टू यू. 10 का आप अपने पेपर की 2 लाइन्स को आप मान लो 10, या अपने हिसाब से, नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इक्वल गैप रख के पॉइंट्स आर टू बी टेकन, 10 then 20, but this gap should be same. Scale के ऊपर if you want to take 3 centimeters का gap, you can take that. Totally your wish. 10, 20, 30, 40 and 50. Because our maximum value is 45, तो इसका मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला ही होना चाहिए 50. 60 नहीं लेना है because that is not required.
ठीक है. After that, now on x-axis, now you please see how many years have been given. 6 years have been given. 1, ये 2, 3, 4, 5 and 6 है. ठीक है. तो that means 6 bars are to be drawn. ठीक. अब ये जो bars हैं, now please see here, मैंने इसलिए ये आपका डायग्राम दिया कि यहाँ पे बुक में गलत बनाया हुआ है. नाउ यू सी फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस फर्स्ट ईयर, ये जो गैप है दिस इज वेरी लेस एंड दिस गैप बिटवीन दीज टू बार्स दिस इज मोर. ऑब्जर्व केयरफुली, ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है. ठीक. दिस इज मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग प्रिंटिंग हियर. अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से अगर आप 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हो गैप, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रखो. फिर देन अमंग ऑल बार्स यू हैव टू कीप द सेम डिस्टेंस. सभी बार्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का ही गैप आएगा. अगर आप 1.5 रखना चाहते हो तो जितना रखना है आपकी मर्जी है. जितना भी गैप आपने ओरिजिन से रखना है, यहाँ पर ये बार से पहले जितना भी गैप आप रखते हो, द सेम गैप इज टू बी मेंटेन्ड अमंग ऑल द बार्स. ठीक. अब आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यू मे टेक 1 सेंटीमीटर. ये बार की 2 पॉइंट्स आप ड्रॉ करके उसका विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ ए बार. And what will be the value? Value is this which is given in the table. First value is 45. तो यहाँ पे आपने ये बार्स का जो भी लेंथ है that should go up to 45. यहाँ से देख के ये 40 to 50 है, ऑलमोस्ट इसका हाफ पॉइंट. ठीक है. इसके सामने 45 तक एक्सटेंड करना है. ऐसे 2 लाइंस आपको लगानी पड़ेंगी, एक पॉइंट यहाँ पे लेके एक यहाँ पे. ये बीच में जितना गैप रखना है आपकी मर्जी. लिसन टू मी केयरफुली. Width of the bar that should be same for all bars, and distance among the bars that should be same. ठीक है. 2 बार्स के बीच में जो गैप है जितना भी आपने डिसाइड करना है हर बार वही रखना है. बार की जो अपनी विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये भी आपकी चॉइस है, बट जितनी भी आप रखोगे वो सभी बार्स में, ये देखो पिंक कलर में जो है, ये सभी बार्स एक जैसी विड्थ के हैं. कितनी रखनी है वो आपकी चॉइस है as per the size of the paper. ठीक है. Now please draw quickly. Don't sit idly. ऐसे नहीं काम चलना. हर्षिता गांधी, you are not drawing. Draw करिए बेटे. All are requested to draw the diagrams. Hardly 7 minutes are left, so please be fast. You have to draw 6 bars. Height is to be kept as per the data which is given. First bar की height is to be extended up to 45. Second bar's height will go up to 35. And how to decide this 35? From this side. Observe from y-axis side. ये 30 to 40 है. Almost इसका mid point लेके scale रख के यहाँ से देख के आपने ये 35. फिर next bar की value है 30. तो with the help of scale, see from this side, यहाँ से 30 के सामने height is to be kept up to 30. फिर next is 28. फिर 24, last 20. ये जो all these points which I am telling, they are given in the explanation. जो ऊपर points दिए हुए ना, उसके में details have been given. Whatever I am speaking, all bars should have same width, and the distance among all the bars that should also be same. जितना भी आपने decide करना है same रखेंगे जैसे भी आपने रखना है. बट ये नहीं होना चाहिए कि एक बार के बीच में ये गैप ज़्यादा है, किसी में कम है, फिर ज़्यादा है, कम है, देन यू विल लूज द मार्क्स. हिमांशु एरी, यू आर नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम. कनव बत्रा इज ऑल्सो नॉट सिटिंग. हाँ जी कनव, ड्रॉ करिए बेटे. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ द डायग्राम्स.
If anything is not clear, you may raise hand. Then Subhajit ma'am will allow you to speak. If anything is not clear, you can ask also. Muskan Sian, your video is not coming. Yes, now it's okay. Manya, done bete? Manya, have you drawn? Very good. Amanpreet, have you completed? Amanpreet Kaur, very nice, very good. Everything is clear bete? Okay? So in the book, whatever theory is given, that is not to be learned. That is only the explanation how to draw the diagram that I am already telling you. So main point to be considered is this gap among the bars should be same. जितना भी आपने रखना है, your choice. And this width of the bar should be same, all the bars. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना गैप है width भी उतनी ही हो. Not necessary. आपकी मर्जी है. ऐसा नहीं देखना कि ये 2 सेंटीमीटर है तो गैप भी 2 सेंटीमीटर हो. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. योर चॉइस. जो भी गैप आप रखते हो अगर 1 सेंटीमीटर तो इट शुड बी सेम अमंग ऑल. ये बार की विड्थ आप 2 सेंटीमीटर रखते हो तो सभी बार्स 2 सेंटीमीटर वाइड ही होने चाहिए. आपकी चॉइस है. बस ये यहाँ पे बुक में यहाँ पर ये रॉन्ग बनाया हुआ है. सी दिस गैप इज लेस एंड दिस गैप इज मोर. दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल ऑफ दिस डायग्राम. तो ऐसे नहीं आपका बनना चाहिए. अगर इतना आपने गैप रखना है तो सभी में इतना ही आए गैप. यहाँ पे ये मिस्टेक है. ठीक है. सो today's work is only this. Hardly 1-2 minutes are there. We may not be able to start next question. So आपका homework है कि आज आपने this exercise of this chapter. Take any value related to this type of question. अभी बाकी नहीं करेंगे, बाकी मंडे को होगा. Simple bar diagram. Try to draw diagrams of any 1 or 2 questions. कोई भी values ले लो. नहीं भी मिलती, you can write yourself. कोई भी value लिख के आप draw कर सकते हो. तो उनकी आपने practice करनी है. ठीक है जी. And then later on I will ask you to send this PDF of pictures of your these diagrams also. ये नहीं सोचो कि कुछ बनाया कि नहीं बनाया, मैम को नहीं पता लग रहा. जितने भी बनेंगे बाद में मैंने मंगवाने स्टार्ट कर देने हैं. Then I will check also. ठीक है जी. So one other thing was there. हाँ, yesterday I remember Manya has sent one picture related to table जो primary articles और index number में था ना, wholesale price index में. तो those students who are having new books, Manya, yours is new edition book bete? Okay, you please click that picture again nicely. I will share among the group also. I was having old book. There are changes certainly. ये होते रहते हैं changes after few years. So you please send me that picture with clarity and then I will share. But those who are having old books, they need to make the changes. थोड़ा सा data में change है so that you can follow. Those who are having new books, no problem, वो वही follow करेंगे. So I will send that picture in the group also. ठीक है? So with this, I want to thank you all and want to take leave from all of you. So complete this diagram. Those who have not finished, ठीक है जी? With this, we close the meeting. Thank you all. Thank